Good morning, everyone, and welcome to the class. Today, we will start a new segment of the chapter Constitution Why and How. As I told you many number of times that actually this chapter Constitution Why and How is now including 4 chapters in it. The first is that Constitution Why and How. The second is Constitution as a living document. The third is philosophy of the Constitution, and the fourth is fundamental rights or rights in the Indian Constitution. Okay. So this is your second chapter in book, but now this ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे पेज नंबर्स में देखते हैं तो पेज नंबर 27 से नो इट्स फ्रॉम यस पेज नंबर 28 है ना. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 28 until the end of the chapter. तो ये पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है, and there is no use of deleting any part of this chapter, because this is most important chapter of this book, because you must know the rights we are having under the constitution. तो ये rights in the Indian constitution जो एक separate chapter है, उसको भी अब फर्स्ट चैप्टर में ही उसी का वो एक पार्ट बन गया है. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बिल ऑफ राइट्स. व्हाट डू वी मीन बाय बिल ऑफ राइट्स? ओके, so we see that first of all, in order to understand Bill of Rights, first of all you need to understand rights. And what are rights? Though there is a separate chapter in book 2, जो political theory वाला पेपर है, उसमें एक separate chapter आपका rights पे है. तो rights क्या होते हैं? Rights are actually, we can say, they are claims. जो हमारे जो claims होते हैं स्टेट से, जो हम क्लेम करते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, है ना. क्यों राइट्स हम क्लेम करते हैं? बिकॉज आवर पर्सनालिटी, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर हैविंग सम राइट्स, है ना. इन द एब्सेंस ऑफ राइट वी विल नॉट बी एबल टू डेवलप आवर पर्सनालिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, है ना. So we need rights, and in a democratic country individuals have certain rights, and the government always recognize these rights, that yes, these are the rights of the people. A democratic government recognizes it, and it also protects these rights. So what we find that in most of the democratic countries, it's a practice that there will be a list of rights of the citizens in the constitution itself, so that in order to give importance to the rights of the individual, this list of right is mentioned in the constitution itself, है ना. And we see that this list of right which is given to the citizens of the country, it is protected by the constitution, and there is provision also to protect these rights by the constitution itself. So this is called bill of rights. Bill of rights, list of rights which are mentioned in the constitution, which are given to the citizens of the country, which are protected by the constitution. Okay, so bill of rights actually it prohibits the government from acting against the rights of the individual, because the constitution has given some rights to the individual, and now the government is compelled to act
within that limit, the government is compelled to act in such a way that there should not be any kind of violation of the rights of individual, है ना? And if there is any kind of violation, then the constitution ensures that there must be some remedy to the violation. अगर violation हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेमेडी होना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होनी चाहिए कि कैसे उस वायलेशन को रोका जाए. इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होता है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज these are very much fundamental to us. We cannot develop ourselves, develop our personality, develop all aspects of our personality in the absence of these rights. So these are very much fundamental for our existence. And because these rights are very much important for us, very much vital for us, that is why the constitution has separately listed these rights, है ना? And not only the constitution has listed these rights, but the constitution also makes provisions for their protection. If in case of violation of these rights, what should be done, है ना? So the fundamental rights are very important, and the constitution itself ensures that they are not violated by the government. Okay, so what we find that when we were fighting against the British rule, we were fighting for self-determination, we were fighting for having a democratic government. Our leaders had realized the importance of rights, you know, and they demanded that the British rule must respect rights of the people. In this regard, we must mention that Motilal Nehru Committee in 1928. This Motilal Nehru Committee, it demanded a Bill of Rights from the British government, and that is the reason that when we became an independent country and the constitution was under the process of making, there were no difference of opinion among the constitution makers, among the framers of the Indian constitutions about the inclusion and protection of rights in the constitution, है ना? So our constitution gave a proper place to these fundamental rights. Okay, now we see there are two types of rights. Like first we are talking about fundamental rights, and there is one more types of rights which are called legal rights. Okay. Fundamental rights and legal rights. So there is difference between these two, है ना? जब हम legal rights की बात करते हैं तो these legal rights are ordinary rights and they are protected and enforced by ordinary law. Okay, और जब हम fundamental rights की बात करते हैं तो the fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution. So this is the difference between the two. It is guaranteed and protected by ordinary law. It is guaranteed and protected by the constitution, है ना? And next thing we see that these legal rights, they may be changed by the legislature, by ordinary process of law making, है ना?
किसी जो लॉ मेकिंग के सिंपल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जो हमारे लीगल राइट्स है उसमें लेजिस्लेचर जो है, जैसे पार्लियामेंट है, जो स्टेट का मैटर है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो यूनियन का मैटर है उसमें पार्लियामेंट, दे कैन ब्रिंग चेंजेस, है ना. But if we want to change, make any change in the fundamental right, it cannot be changed by ordinary process of law making. But in order to change the fundamental right, we need to amend the constitution, है ना. And moreover, there is and this provision is also there in the constitution that no organ of the government has the right to act in a manner that violates the fundamental rights, है ना. But legal rights are not such. This kind of protection is given only to the fundamental rights, है ना. So this responsibility of the protection of the fundamental rights of the people is given to the judiciary by the constitution. The constitution has made the judiciary as the custodian of the fundamental rights of the people. If there is any kind of violation of the fundamental rights of the people by any individual or group of people, or the organ of the government or a governmental institute or anyone, if anyone violates the fundamental right of the people, it is to be protected by the judiciary, है ना. The constitution has made judiciary the custodian of the Supreme Court. The Supreme Court and the High Court as well, both of them. The judiciary, we can say, we see that judiciary has also this right that any decision of the executive or any law made by the legislature can be declared as illegal if judiciary feels that it violates the fundamental rights of the people. So this is the importance of fundamental right, but the legal rights are not such. They are simply provided by the ordinary they are simply provided by to us by ordinary लीगल जो हमारे पार्लियामेंट है वो इसको बनाती है, पार्लियामेंट इसको एनफोर्स करती है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन. बट जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से सीधी जुड़ा हुआ है. तो दिस इज़ द डिफरेंस. ओके, बट यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि वो तो हम खैर हर जब भी जिस भी राइट्स को पढ़ेंगे उसमें हमें ये आते जाएंगे कि कोई भी राइट हमें एब्सोल्यूट वे में नहीं मिला. एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी लिमिटेशंस. It's not like that we are given rights in an absolute manner. We can there is no limitation on the rights. It's not like that. There is limitations. Our rights can be limited, and restrictions can be put on our rights if it violates any kind of it causes any kind of national issue, security, national security से अगर जुड़ा हुआ कोई इशू है तो इसमें हम लोग इसको रोका जा सकता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें कितने राइट्स मिले हुए हैं. जो राइट्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and the last is right to constitutional remedy. So these are 6 fundamental rights which are mentioned in the constitution. In this regard, you must know that originally our constitution has given us 7 fundamental rights. The one fundamental right which is not there, which is now not there in the list, is the right to property. Now right to property is converted to legal right. We will discuss about this right to property later. First of all, we will discuss those rights which we are still enjoying, and in these rights, the first
and the most important right is the right to equality. Okay. So, what do we mean by right to equality? So, in order to understand right to equality, we are going to discuss two imaginary situations, which are, though we are saying that it's imaginary, but actually these kind of happenings, these kind of things are happening still today. Today we can say after 70 years of implementation of the constitution, we are still facing this situation in our society. People experience such situation in real life, which we are just now going to talk about. There is a person, Swadesh Kumar. Okay, Swadesh Kumar is visiting his village. He is accompanied by one of his friends. Okay. Now these two friends, Swadesh and his friend, they decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. Now they were very near to their village. They were just to enter the village. वहीं पर रोड साइड में होटल है जहाँ पर they decided to have a cup of tea. Now we see that the shopkeeper, the जो टी स्टॉल जिनका है, वो शॉपकीपर जो है he knows स्वदेश कुमार, है ना, but he is not knowing his friend. So he asks the name of his friend, and this is very common in our society that we used to ask the name of any person in order to know the caste of that person. That is the main reason when to know why we want to know. आप कई बार इस चीज़ को फील करते होंगे, कोई भी जब हम किसी से मिलते हैं तो थोड़ी सी बात होती है, देन वो आपका नाम पूछता है, नाम नहीं पूछता है, वो आपका कास्ट जानना चाहता है. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी. ओके, सो जो शॉपकीपर था उसने उसका नाम पूछा, और जब नाम पूछा उसके, ठीक है, दोनों को चाय उसने सर्व किया. तो स्वदेश जो थे, जिनको कि टी स्टॉल ओनर जानता था, स्वदेश को तो एक बढ़िया से जो मग होता है उसमें उनको चाय मिला, एंड उनके फ्रेंड को जो चाय मिला वो एक अर्दन कप में मिला, मिट्टी के जो कप होते हैं, कुल्हड़ जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, उसमें मिला उनको. क्यों? क्योंकि ही वॉज दलित. जब उसने नाम पूछा तो उनको उसका कास्ट पता चल गया, और कास्ट से ये समझ में आया कि वो एक दलित है. तो अब दलित को तो बहुत ही हमारी सोसाइटी के अंदर अनटचेबल बिहेव किया जाता है, अनटचेबल माना जाता है. तो उसको सेपरेट कप दिया गया, मतलब ऐसा कप जो पी करके जिसको यूज़ एंड थ्रो वाला, है ना. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके जो दलित हैं उनको अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, जो अपर कास्ट के हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है. ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है, जिसमें कि वी फाइंड दैट एन ऑर्डर इज सर्व्ड टू 4 न्यूज़ रीडर्स ऑफ अ टेलीविज़न चैनल. टेलीविज़न चैनल में 4 लोग जो कि न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको एक ऑर्डर सर्व किया गया, और इसमें ये कहा गया कि दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन अ स्क्रीन. अब उन्हें स्क्रीन पर न्यूज़ नहीं पढ़ना है. दे आर ऑल वुमेन. ये चारों जो लोग थे, जो न्यूज़ रीडर थे, दे वर ऑल वुमेन. नाउ द रीज़न गिवन इज वाई दे आर नॉट allowed to read the news on a screen now. The reason was that they are above the age of 45. So because they are above the age of 45, so they do not need to read newspaper on screen. This was the reason given by given in the notice. And there were other male news readers as well,
and they were above the same age. They were also 45 plus, but they were not given this kind of notice. They were not prohibited they were not prohibited from presenting the news. They were still reading news on the screen. So what is it? This is डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना. जेंडर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. 45 प्लस की जो वुमेन है उनको ये कहा गया कि वो आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, जबकि 45 प्लस के जो मेल हैं उनको न्यूज़ पढ़ने दिया जा रहा है. तो दिस इज़ इसको हम अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है वुमेन के कंडीशन को एक सोसाइटी के अंदर बुरा बनाता है. उसको इन्फीरियरिटी उसके अंदर लाई जा रही है कि वो ज़्यादा एज के हो गए तो दे आर नॉट प्रेजेंटेबल. द मेल इज़ प्रेजेंटेबल बट द फीमेल इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंटेबल इफ सी इज़ मोर देन 45. सो दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐसी बात नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, इमेजिनरी नहीं है. रियल लाइफ में भी फील दिस होता है, बिल्कुल होता है. आप देख लो बॉलीवुड के जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, हर समय एक्टर को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली, अगर एक्टर है तो उनको बहुत ज़्यादा वो मिलता है एक मूवी करने का जो उनको पैसे मिलते हैं, और एक्ट्रेस है तो कम मिलता है. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अभी भी है ना. आज 70 इयर्स हो गए लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए स्टिल वी फील कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है. हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन between among the people on the basis of gender, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of birth of place, on the basis of creed or anything like that. But still it is happening. That is another matter. But you must understand what is the provision in the constitution. As I told you earlier also, never think that if some provision is made in the constitution it means that we have achieved that, हमें वो मिल गया. सिर्फ constitution में कोई चीज़ लिख देने से वो हमें नहीं मिल जाती है. तो फिर constitution में लिखने का फ़ायदा क्या है? yes, बेनिफिट है. क्या बेनिफिट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट और रिलीजन, एंड इफ such discrimination is taking place somewhere, then the victim, the person against whom this discrimination is done, he can fight against this discrimination now because it is unconstitutional. तो constitution के against जाके अगर आप discrimination कर रहे हो तो हमें लड़ तो हम सकते हैं, ठीक है, हमें मिला नहीं, बट उसको पाने के लिए हम लड़ तो सकते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाते ना. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो सेक्शन, जिस सेक्शन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथ देता है, ताकत देती है लड़ने की, है ना. तो दैट इज़ अनदर थिंग, इम्प्लीमेंटेशन. अभी हम लोग इस मुद्दे पर आएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह की इक्वालिटीज़ देता है. तो सबसे पहले जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. Everyone is equal in the eyes of law. Law cannot discriminate among people on the basis of anything like caste, class, gender, religion, language. Okay, so everyone is equal. Everyone will get equal protection of law and all. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट टू इक्वालिटी है वो ये है कि इक्वल एक्सेस टू
public places. This is very important. जो भी पब्लिक प्लेस है, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, देन शॉप है, मार्केट प्लेस है, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, होटल है, वेल है, बाथिंग घाट्स है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, इन सब जगहों पर कोई भी किसी को जाने आने से मना ही नहीं कर सकता है कि आप लोअर कास्ट के हो तो नहीं जाना है आपको, आप दूसरे रिलीजन के हो तो नहीं जाना है. Everyone is free to access to the public places, and this right is very important in our society, because we know that in our society there were people who were considered as untouchables, and the public places were not accessible to them. They cannot go, they cannot go to those public places like schools, temples, everything was closed for them. So under this constitution it is given that equal access to public places to all. Okay, and this we see जैसे कि खास करके जो वाटर के सोर्सेज हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि वाटर को लेकर के जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी कुछ हुआ पड़ा है हमारे पीछे की सोसाइटी में. ऐसा माना जाता था कि जहाँ से अपर कास्ट का आदमी पानी ले रहा है वहाँ से लोअर कास्ट के इंसान को पानी लेने का राइट नहीं है ना. तो ये चीज़ें थी जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करने का बहुत ही अच्छा एफर्ट किया गया है ना, कि ये चीज़ें अब आगे हमारे साथ साथ न चले. ओके, सो दिस इज़ now again one more important right to equality is this that the practice of untouchability is now banned. Now it is abolished, because this is we can say the crudest manifestation of inequality, है ना. किसी एक को अनटचेबल मानना, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, ये हाईली इनह्यूमन था, बट ये होता था हमारी सोसाइटी में. बट नाउ इट इज़ बैंड, इट इज़ अबॉलिस्ड. एंड इसी के अंदर एक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, इसको हम लोग थर्ड लिखेंगे, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. Okay, abolition of untouchability, and then we all have equality of opportunity. It means that there cannot be any kind of discrimination in public employment, और जो भी public employment के लिए जो वांट निकलता है उसमें ये इस बेसिस पे कि कोई किसी रिलीजन का है या कास्ट का है या जेंडर का है तो उसको नहीं, ये उसके लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. वी ऑल हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. Okay, and next we find that our constitution also prohibits the state to confer any title on a person. ठीक है, किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता है. लाइक पहले समय में राय साहब, राय चौधरी, ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे स्टेटस के बेसिस पे. अब वो नहीं है. अब अगर किसी को टाइटल मिलेगा तो सिर्फ दो ही बेसिस पे मिलेगा, एक मिलिट्री और दूसरा एकेडमिक फील्ड में जिन्होंने मिलिट्री के फील्ड में या एकेडमिक फील्ड में जिन्होंने एक्सीलेंस हासिल की हो उनको ही ये टाइटल मिलता है और किसी को टाइटल नहीं मिलता है. तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट टू इक्वालिटी बनता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स.
Okay, so these are the important right to equality we enjoy in our society under the constitution of our country. Okay, this is all for today. We will continue with this in the next class.